Hi children, today in this session I am going to talk about equivalent fractions. What are equivalent fractions? Equivalent fractions are the fractions that is the same as another fraction with a different denominator. Or we can say equivalent fractions are the fractions that have different numerator and denominator but are equal to the same value. You can understand these two different definitions if they are expressed in figure form. Like for example, 2 upon 4 and 3 upon 6 both are equal to 1 upon 2. Value of both the fractions are equal to 1 upon 2. How? Let's see. For this, in this case, you have to get the reduced form of it. You can just see this denominator can be further factorized. Here also you can factorize 6. Okay, let's see. 2 upon 4 on further factorizing, 2 1s are 2 2s are 2 and this 2 gets cancelled, remains 1 upon 2. Same way here 3 upon 6 can be expressed like this. 3 1s are and 3 2s are, the common factor gets cancelled, remains 1 upon 2. So both of its value is 1 upon 2. So both of the fraction numbers have same value. So we can call it 2 upon 4 and 3 upon 6 are equivalent fractions. Now, other way of checking is instead of reducing them into one form, we can do in a different way. What can we do is this: the denominator, you have to take the product of the denominator of the first fraction number and numerator of the second fraction number. Its answer should be equal to the product of the numerator of the first fraction and denominator of the second fraction. It's going to be like this actually: 2 upon 4 and 3 upon 6, like this. Product of 4 and 3 should be equal to the product of 2 and 6. If they are same, then the given fractions are considered to be equivalent. Like here, 2 6 are 12 and 4 3s are 12. So 2 by 4 and 3 by 6 are equivalent fractions. This is another way of checking whether the given two fraction numbers are equivalent or not. Welcome children to our maths class. Today we are going to do exercise 7.3, question number 3. Replace the box in each of the following by the correct number. You have been given two equivalent fractions, but in one of the fraction either the numerator or the denominator will be missing and we have to find out that missing number. See, this is how I do, where the box you consider it as x, and taking that as x, what will you do is you will multiply, cross multiply. You will take the two numbers opposite to each other, one numerator and the other one denominator, multiply it, 7 into 8, multiply and divide it by the number which is left alone. Okay, this is the rule to calculate the missing or find the missing number of the equivalent fraction. And so simplify, 2 1s are 2 4s are. So you can see 7 4s are 28, 2 1s are 2 4s are. Left is 2 and 4, 7 and 4, 7 4s are 28. Likewise, you can see here I have solved it. 8 into 10 divided by 5, 5 1s are 5 2s are 2 8s are 16. Next, 3 upon 5, here the numerator of the equivalent fraction is missing. Same, then also nothing to worry. सामने सामने जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 and 20 you multiply and divide it by the left out
number 5 which is left alone. 5 ones are 5 fours are 4 threes are 12. So fill it up over here. Then the fourth one you can see 45 upon 60 is equal to 15 upon dash. 60 और 15 को मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करें 45 से. यहाँ पे मैंने एक तरह से ऐसे सिंप्लीफाई किया है. आई नो द table of 15, so 15 ones and 15 threes are 45. Then 60 is divided by 3, got 20. But the same thing can be simplified in a different way. This I have done it here, second 3 ways I have done it just to explain you that you can simplify the sum in your own way. You need not strictly stick to the way I have showed you. Okay, you can do it in any ways. Condition is that you should be perfect in multiplication table. See, now you check here 5 and 5, 15 and 45, both ends with 5, and as per the divisibility test, both are divisible by 5. So I have written 5 threes are 15 and here 5 nines are 45. 5 and 5 got cancelled, left 3 and 9. Now again, we know 3 ones are and here 9 is 3 threes are. I have written the factors. 3 and 3 got cancelled. So left 1 with 60 and down only 3 is left. So 60 upon 3. So we have come to that position, 60 by 3. Divide it and you get 20. Same way, the third way of doing, now I have selected 60 and 45 because last digit is 0 and here 5. So both are divisible by 5, and here in 5's table when do you get 60? 5 12s are 60 and 45 is 5 9s are. तो 5 5 कट हो गया, यहाँ पे बचा 12 और यहाँ पे बचा 9. अभी 12 मतलब 3 4s are और 9 मतलब 3 3s are. Here we can write 6 2s also, but I didn't take 6 2s are because 2 is not common over here in 9. 9 and 12 में कौन सा कॉमन है? 3 is common. So 3 4s are and 3 3s are, 3 got cancelled. So we have 4 upon 3 and here 15 is left here. So 4 15s are 60 divided by 3. Finally you get answer 20. So you can see 3 different ways of simplifying and getting the answer x is equal to 20. Write down 20 in the missing, that is the blank space. And similarly, fifth sum 18 upon 24 is also solved. Now we move on to question number 4. Find the equivalent fraction of 3 upon 5 having, there are 3 separate sums. You have to find out equivalent fraction of the given fraction number. In all the 3 cases you have to take 3 upon 5, but in the first case you have to find out the equivalent fraction where the denominator is 20. Okay. In second case numerator is 9 and in the third case again the denominator is 30. Okay. तो चलते हैं फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं. 3 upon 5. Now in this case where denominator you have to have 20, then what will you do? You will check when do you get 20 in 5's table, because denominator's number only have to check. 5 4s are 20. So I will multiply 4 on 4 with 3 upon 5. So 3 4s are 12 and 5 4s are 20. मिल गया आपको equivalent fraction, a fraction which is equivalent to 3 upon 5 and again it has 20 in the denominator's place. चलो, तो ये हुआ 12 upon 20 which is equivalent to 3 upon 5 with the denominator, with the condition that the denominator should be 20. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सम. यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका न्यूमरेटर 9 होना चाहिए. ओके, तो हम ले लेते हैं 3 upon 5. दिस इज द बेस फ्रैक्शन विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. न्यूमरेटर का नंबर क्या है? 3 है. न्यूमरेटर में 3 है. 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना है? व्हाट विल यू मल्टीप्लाई विथ 3 टू गेट 9? 3s are. So 3 3s are. So
तो 3/3 यू विल मल्टीप्लाई, एंड इट्स अ रूल, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना है. तो 3/3 मल्टीप्लाइंग इट. So 3 3s are 9 and 3 5s are 15. So 9/15 is that equivalent fraction which has numerator 9 and it's equivalent to 3/5. Similarly, we have solved the third sum where denominator should be 30. अभी फिर से 5 को चेक करते हैं. 5 के टेबल में 30 कब आएगा? 6 सर. So multiplied 6 on 6, and so we have 3 6 are 18 and 5 6 are 30. Here to get the required equivalent fraction, we are multiplying certain number. जहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्रैक्शन नंबर आपको दिया गया है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है और जो रिक्वायरमेंट है वो नंबर्स ग्रेटर दैन द गिवन फ्रैक्शंस आर. सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. यहाँ पे भी वही है, डिमांड इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बट थिंग इज दैट हियर द गिवन फ्रैक्शन is not in reduced form and we have to obtain equivalent fraction with the conditions given, and the numbers in the condition which are taken are quite smaller than the given fraction. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको equivalent fraction चाहिए जिसका न्यूमरेटर 9 है. अब 9 36 से तो छोटा ही है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट दैट कॉमन फैक्टर बाय विच ऑन डिवाइडिंग यू गेट द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? चलो, अब आपसे यस की उम्मीद तो नहीं रख सकती अभी. ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे, PDF में से सम कॉपी डाउन करोगे, और तब जाके अगर आपको समझ में नहीं आया तो एज यूजुअली आई हैव टोल्ड यू, जस्ट टेक्स्ट मी इन द क्लास ग्रुप और यू गिव अ कॉल. आई विल explain you again, or you can view the video again and again to understand the explanation or the sum. तो चलिए, हमें न्यूमरेटर में 9 चाहिए. 36 का 9 कब कैसे होगा? तो आप सोचिए, 9 के टेबल में 36 कब आता है? 4 सा. सो यू डिवाइड the given number with 4/4. What will you think of? आप याद करोगे जो न्यूमरेटर, जो नंबर आपको न्यूमरेटर में चाहिए उस नंबर में आपको कब ये गिवन फ्रैक्शन मिलता है. तो न्यूमरेटर में क्या है? 36 है. तो 9 के टेबल में 36 कब आता है? तो 9 4s are. सो डिवाइड दिस नंबर बाय 4. तो हमने 4 से डिवाइड किया तो मिला क्या? 4 9s are 36. सो 9 48 को 4 से डिवाइड करने पर मुझे मिला 12. सो आंसर इज 9/12. यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए. 48 के बजाय डिनोमिनेटर में हमको 4 चाहिए. तो आप सोचो 4 के टेबल में 48 कब आता है? इन 4's टेबल व्हेन डू यू गेट 48? इट्स 12. 4 12s are 48. ओके, तो आप डिवाइड करें 12 से और आपको मिल जाएगा 3/4. नाउ यू मे से दैट टेबल्स में आप परफेक्ट हो तो आप आराम से कर सकते हो, ओरली कर सकते हो. ये आपके लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं है. एक तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल थरली लर्न कर लीजिए. 20 तक का टेबल अगर ओरली आप कर सकते हो इजीली विदाउट राइटिंग, मल्टीप्लाइंग एंड चेकिंग, तो ये आसान हो जाएगा. अदरवाइज देयर इज़ अ वे. ये जो नंबर है इसको आप इससे डिवाइड करें. तो हमने डिवाइड किया 48 को 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे मिला 12. ओके, मुझे मिला 12. अब इसी नंबर से आप ये दोनों नंबर को डिवाइड करोगे. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर को ही 4 से डिवाइड करेंगे.
क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर को ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो आंसर मिलता है उस आंसर को यहाँ पे लिखेंगे और फिर से डिवीज़न करेंगे और आंसर मिल जाएगा। 12 के टेबल में 36 कब आता है? 12 3 सो राइट हियर 3। 12 के टेबल में 48 कब आता है? तो 4, 3/4। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 4, तो वही 4 हमने यहाँ पे लिया, है ना आसान। इट्स वेरी इजी, मैथ्स इज एक्चुअली वेरी इजी इफ़ यू कंसिडर इट एज अ गेम। ओके, चलो बच्चों आज यहाँ तक। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द अदर सम्स।